सो नमस्कार ऑल ऑफ यू। ओडिशा जुडिशियल सर्विस पे जो माने प्रिपेयर करछंती तो ताको पई आरोहन क्लासेस जो कोर्सेस अछि ता विषय रे मु किछि डिटेल्स आपन कहबे। तो हमर पैटर्न आउ बेसिक रिक्वायरमेंट जोटा रहिछि एलिजिबिलिटी रो 3 वर्ष रो प्रैक्टिस सेटा चेंज होला परे आपनकर पैटर्न ऑफ प्रिपरेशन रे भी टिके चेंज करिया पे पड़िबो आपन। तो गोटे जिनस है कि आपणकर 3 इयर्स रो एक्सपीरियंस जो दरकार रहिबो सेथरे ऑब्वियसली आपन को कोर्ट अटेंड करिया पे पड़िबो एटलीस्ट वीकली 2 to 3 डेज एटलीस्ट आपन जो भी चैम्बर संगे एसोसिएटेड हेबे कि जदी इंडिपेंडेंटली भी आपन प्रैक्टिस करिया पे चाहउचंती ताहले भी आपन को टाइम टिके दबा पे पड़िबो। बट से जिनसो से जो क्वेश्चंस करिका केते बळे आसीबो जेतला आपण इंटरव्यू को जाउछन प्रीलिम्स और मेंस रे बेसी ता ऊपरे एते फोकस रहिबोनी। प्रीलिम्स और मेंस जेमती होउथिला सेमती ही हबो। मु जदी मेंस क्वालिफाई करूची ताले भी इंटरव्यू को जिबी तेनु सेटा आपण को भाबी की माइंड रे रखियार अछि। जो माने एबेटू प्रिपेयर करूचंती 3-4 वर्ष परे परीक्षा देबे ग्रेजुएशन एलएलबी सरीनी आपणकर ताले आपन को स्ट्रेटजी कोन होबा दरकार। जो माने ऑलरेडी प्रिपेयर करि सारलेनी आ एबे एक्सपीरियंस 3 इयर्स एक्सपीरियंस रे आपन चैम्बर जाउचंती आपन को स्ट्रेटजी कोन होबा दरकार ता ऊपर मु टिके किछि डिस्कशन करिवि। तो हमर फर्स्ट कोर्स जोटा रहउची सेटा हैला इंटीग्रेटेड कोर्स। इंटीग्रेटेड कोर्स माने एतरे प्रीलिम मेन इंटरव्यू तार एंटायर थ्योरी क्लासेस तार एंटायर टेस्ट सीरीज प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चंस सब गुडा आपन को ऐप रे एक्सेस मिलुची। तो एथरे बेसिकली एटा हला A to Z सब जिंस एई कोर्स रे कवर रहउची। आ एटा लाइफ टाइम कोर्स ता टिल सक्सेस बैच ऐप रे जो आपन जॉइन करिवे सेथरे आपनकर ड्यूरेशन रहउची 30 इयर्स। ओके ऐप सेटा 30 इयर्स डिफाइन करउची लाइफ टाइम बैच ता को। तो जो माने क्लासरूम रे जॉइन करिया पे चाहउचंती हम क्लासरूम सेंटर खंडगिरी भुवनेश्वर रे अछि ताले सेटा 40,000 रहउची कोर्स फी जोटा आपण इंस्टॉलमेंट्स रे भी ऐप रे दे परिबे। जदि आपण वन टाइम दोचंती ताले सेठी गोटे कोड थिबो वंदे मातरम से कोड ता यूज करिकि 10% रो आपण डिस्काउंट पाई परिबे। तो 40,000 जगह रे 36,000 आपण दे परिबे। एटा हला क्लासरूम पाई। ठीक सेमते आपण क्लासरूम आसी पाउ नांदी ऑनलाइन रे से भी चाहउचंती तो ऑनलाइन 30,000 तार कोर्स फी रहउची से 30 वर्ष टिल सक्सेस बैच रो। आ वन टाइम जदि पे करचंती से वंदे मातरम कूपन टा यूज करिकि आपण 10% रो डिस्काउंट पाई परिबे। माने 30,000 जगह रे आपण 27,000 रहइबो कोर्स फी। आ इंस्टॉलमेंट्स रे भी आपण दे परिबे सेटा 5,000 करिकि आपण को मंथली इंस्टॉलमेंट रे भी दे परिबे। इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी टा आपण को ऐप रो पूरा तळु को पळेबे सेठी थिबो पे इन इंस्टॉलमेंट्स। बही आपण को 14टा प्रिंटेड बुक्स मिलुची सेटा जदी आपण वन टाइम पे करचंती तो एडमिशन रो 7 दिन परे आसीकी सेंटर रो कलेक्ट करिया पे हबो। जदी आपण इंस्टॉलमेंट्स रे पे करचंती ताले जो लास्ट इंस्टॉलमेंट जेतले आपण को क्लियर हबो तारो 7 दिन परे आसीकी आपण कलेक्ट कर परिबे। आउ कोन कोन ए बैचेस रे हमर इंक्लूडेड रहउची टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स पाई टेस्ट सीरीज मेन पाई आंसर राइटिंग बैचेस मेंस पाई जोटा कि हम मेंटरशिप बैच कहूछु। सेतरे कोन होउची ना एवरी डे हमें किछिटा पर्टिकुलर जोटा आगुरो हमें डिस्कस करूछु सेही सेक्शंस 10-10 टा सेक्शन रो 20 टा प्रीलिम्स क्वेश्चन करूछु 2 टा मेंस आंसर्स आपण लिखछु। ता छडा इंपोर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन वाइज क्वेश्चन मेंस रो तारो भी आपण को डिटेल्ड मॉडल आंसर्स मिलुची सेक्शन वाइज। ऑलरेडी इंडियन एविडेंस एक्ट से सरी और सीआरपीसी ऑलमोस्ट अधा हो गलानी से। तो डिपेंडिंग ऑन आपण को रिक्वायरमेंट जदि आपण को पूरा आपण कांसेप्ट क्लियर नहीं पूरा बेसिक्स रो आपण पढिया पे चाहउचंती ताले इंटीग्रेटेड बैच रे जॉइन करिवे। अच्छा जदि मु ऑलरेडी कोर्स सारी सर्च आइदर सेल्फ स्टडी रे कि जेमति भी मु कोर्स कंप्लीट कर सर्च किंतु मोर मार्क्स भलो आसुनी लास्ट 2-3 मेंस रे तेनु मते इंप्रूव करिवार अछि मोर मार्क्स। तो सही केस रे आपण मेंटरशिप किमा आंसर राइटिंग बैच रे जॉइन कर परिबे। तार कोर्स फी रहउची 5,000 रुपीस आ सेतरे आपनकर एवरी डे प्री डिटरमाइंड जोटा ग्रुप रे दिया आइतिबा गुरु सब्जेक्ट्स रो प्रीलिम्स पई 20 टा क्वेश्चन और मेंस पई 2 टा क्वेश्चन रहउची जोटा लाइव रहइबो क्लासेस रो डिस्कशन जार रहउची। ता छोडा आपनकर एवरी डे 6-6 टा मेंस रो क्वेश्चंस भी आपनकर ऐड ही जाउची। तो सेक्शन वाइज
सेगुड़ा भी आपण ताको कवर करि परिबे तो डिपेंडिंग ऑन आपनकर रिक्वायरमेंट कोन अछि जदि आपण सेल्फ स्टडी करचंती आ निजे आपण को पढ़िबा भल लाଗୁची निजे पढुचंती मेनली बट आंसर राइटिंग आ आपनकर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन से गाइडेंस केवल दरकार तो सेतरे आपण आंसर राइटिंग और मेंटरशिप बैच रे जॉइन करि परिबे ओके तो एबे फॉर एग्जांपल एबे जो पीडीएफ टा मु आपण को देखौची सेटा हमर आंसर राइटिंग किमा मेंटरशिप बैच रो एटा हमें बीएनएस रो सेक्शन 1 टू 10 जोटा दिन आगु कंप्लीट हेची तो एथर देखंतु क्वेश्चन रहला तर आंसर रहइबो आ तार एक्सप्लेनेशन डिटेल एक्सप्लेनेशन रहइबो काहे कि एई ऑप्शन टा ठीक काहे कि एई ऑप्शन टा ठीक नो और सबुठ बड़ एडवांटेज हैला आपण जदी एक्सप्लेनेशन टा ठीक रे देखिबे ताहले जहां भी आपनकर आउ गोटे क्वेश्चन भी जदी पड़ी जाउची सेही एक्सप्लेनेशन भितरु ताहले आपण इजीली सेटा करि परिबे तेणु एक्सप्लेनेशन जो 20 टा क्वेश्चंस और तार डिटेल एक्सप्लेनेशन आपण पढुचंती ता भितरु अलगा भी जहां क्वेश्चंस पड़िबो आपण ताको आंसर करि परिबे स्पेशली जो एनालिटिकल किंबा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन गुडा रहउची ठीक सेमती मेंस रो भी क्वेश्चंस रहबो एथरे मेंस रो जो क्वेश्चन रहउची एथरे इंट्रोडक्शन ओके केमती आपण को लिखिबार अछि स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर कोन लिखिबार अछि बहुत गुरे वैल्यू एडेड जिंस एथरे थाए जेमती कि इंपोर्टेंट मैक्सिम्स रेलेवेंट मैक्सिम्स कोन अछि से पर्टिकुलर आंसर रे लैंडमार्क जजमेंट्स बहुत गुरे दैछि ता भितर हमें गोटे कि दिटा लिखिबा आउ इवन इलस्ट्रेशंस भी दैछि आपण को कांसेप्ट क्लियर करिया पे तापरे जदी हाई मार्किंग क्वेश्चन रहइबो 25 मार्क रो क्वेश्चन हैला कि 15 मार्क रो क्वेश्चन हैला ताहले गोटे स्ट्रक्चरल फंक्शनल डायग्राम टा आपण केमती कर परिबे किंबा जदी 10 मार्क क्वेश्चन अछि गोटे बेसिक लॉजिकल डायग्राम टा आपण केमती कर परिबे तेणु ए सब जिंस एटा डेली बेसिस रे आपण प्रैक्टिस करले ओके जो भी आपण जदी एवरीडे गोटे क्वेश्चन भी लिखुचंती ताहले अल्टीमेटली मेंस रे बहुत आपण को हेल्प करियो एटा एपीपी पिलांग एपीपी रो तो बैच अलगा अछि जेतु तांकर किछिटा पेपर्स अलगा अछि तो मेनली एटा जुडिशियल सर्विस जो तरी की रिटर्न कंपोनेंट अछि ओके प्रीलिम्स तो रहइला तो सहित रिटर्न कंपोनेंट भी एथरे रहउछि ओके सो एटा हला तार डिटेल्स टा एबे आमे जो डिस्कशन क्लास टा मु कहउछि तो से डिस्कशन क्लास टा भी आपण देखिबे कि कोन कोन एथर स्ट्रक्चर रहउछि सो आपनकर जहां भी रिक्वायरमेंट हेई थाउ इधर आपण जीरो रु पढिबे ओके किंबा आपण एंती आंसर राइटिंग बैच केवल जॉइन करिवे तो सबुर सॉल्यूशंस एठी प्रोवाइड करा होछि आ गुटे जिंस हला जो माने ऑनलाइन बैच रे जॉइन करूचंती इंटीग्रेटेड बैच रे गोटे मेजर इशू हो कि हमर किछि डायरेक्टली हमें फैकल्टी का संगे रे मीट करिया पे चाहूछु ओके ऑल्दो जो क्लास करी कहबे ओटा लाइव क्लास हुए गूगल मीट रे तो आपण पचारि परिबे जेतेबेले भी जहा आपण रिक्वायरमेंट अछि सेठी भी पचारि परिबे संडे दिन स्पेसिफिकली 8 आवर्स 8 टू 10 आवर्स रो क्लास हुए कांटेक्ट क्लासेस सकाळ 10 टा रु संध्या 8 टा पर्यंत ऑनलाइन स्टूडेंट्स माने जो माने बाहर रहउचंदी भुवनेश्वर रु से माने संडे दिन आसी कि भी तांकर फैकल्टी का संगे डायरेक्टली मीट करी कि तांकर डाउट्स करिका क्लियर करि परिबे कि किछि सजेशंस नबार अछि आपण निजे आंसर लिखिचंती सेटा तो आपण पठेबे ताकू पीडीएफ करी कि ऑनलाइन स्टूडेंट्स बट जदी ताकू देखिया पे भी चाहउचंदी फैकल्टी कि मु एमती लिखिछि आ केमती लिखले बेटर हबो तो संडेस भी आपण आसी परिबे ओके तो सेटा कांटेक्ट क्लास टाइप रो आपणकर एवरी संडे रोज सो एटा हला आपणकर जहा बेसिक्स हमर जो डिफरेंट कोर्सेस अछि ता रिलेटेड थैंक यू ऑल सो नमस्कार ऑल ऑफ यू टेस्टा समस्ते क्वेश्चन पाई जाइथिले आपनकर ग्रुप रे ऑलरेडी क्वेश्चन दिया जाइछि ग्रुप रे ऐप रे भी दिया जाइछि हमें आंसर्स रा डिस्कस करिबा तापरे आपनकर जो डिटेल सॉल्यूशन टा भी आपण ऐप रे पाइ छिबे ठीक अछि तो आज हमें बीएनएस तो हमें अल्टरनेट डेज रे बीएनएस और बीएसए टा देखिबा ओके बीएसए सेक्शन 1 टू 10 रा क्वेश्चंस ऑलरेडी दिया जाइछि हला तो ताकू देखि देबे 4 रु 5 टा आपण टेस्ट टा देबे निजे
5 6टा आम डिस्कशन कर ठीक अच्छे सो प्रथमे आमर स्ट्रक्चर टा मु कहि दउची 20टा आपणकर एमसीक्यूज माने प्रिलिम्स पई क्वेश्चंस रहबो 20टा प्रथम तापर दीटा मेंस रो क्वेश्चन रहबो मेंस रो क्वेश्चन जोटा 15 मार्क क्वेश्चन रहबो तेनु 15 15 30 मिनिट आपन को मिलिबो केना हमर पैटर्न टा कोन रहउची ना 1 मार्क 1 मिनिट ठीक अछि त से स्ट्रक्चर टा सब आडे से अछि एपीपी रे भी जदि अपन देखिबे 150 मिनिट 150 मार्क माने 1 मार्क पे 1 मिनिट ठीक सेमती ओजेएस रे भी आपणकर प्रोसीजरल लॉ पेपर रे 150 मिनिट्स 150 मार्क्स ठीक अछि आउ ऑप्शनल पेपर्स रे 150 मार्क्स किंतु 180 मिनिट्स माने 3 घंटा रा सेटा थाए तो सेठी कोन ना गोटे मिनिट रु टिके अधिका मिलिबो गोटे गोटे मार्क पे हला कि आपण प्रैक्टिस करंतु गोटे मिनिट गोटे मार्क तो 10 मार्क क्वेश्चन पढ़ले 10 मिनिट 15 मार्क क्वेश्चन पढ़ले 15 मिनिट 25 मार्क क्वेश्चन पढ़ले 25 मिनिट हला एई स्ट्रक्चर रे प्रथम रु लिखिबा आरंभ करंतु लिखिबारे भूल हबो किछि व्यस्त हबर नै जेमिति जा होउची आपण लिखंतु ठीक अछि तो स्ट्रक्चर टा जो दिया है आपणकर मेन्स रो जो आंसर टा मॉडल आंसर टा सब जिन मन रखिए मॉडल आंसर भली आप आंसर लिख पारे ठीक अच्छे संभवपर ही नुह किंतु मॉडल आंसर टा गोटे होलिस्टिक आपन को आइडिया दे दोची ओके गोटे होलिस्टिक आइडिया आपन को दे दोची कि ए सबु ए क्वेश्चन जा पचारची आर सबु एस्पेक्ट्स आपण को आंसर कवर करूची तो आजिर जो जदि मु कहबी देखिबा हमर आंसर्स करिका ओके जोटा आपण पाइ जे परिबे आपण ऐप रे बोथ प्रीलिम्स पई और मेंस पई केमती कोन आपण आंसर कीटा यूज करिवे फर्स्ट मु सेटा कहि देबी तापर हमें डिस्कशन टा करिवे एटा तार आंसर कीटा ओके तो एठी गोटे इनसे देखिबे मु तो एबे आंसर सुडा खाली डिस्कस करिवि किंतु जो एक्सप्लेनेशन देछि देखंतु प्रीलिम्स रो जो क्वेश्चन सुडा रहिबो सेथरे को ऑप्शन टा काहे की ठीक अछि आउ को ऑप्शन टा काहे की ठीक नाही सेटा टिके भलरे पढिबे एटा डिटेल से आपण को 20 टा क्वेश्चन रो एथरे लाभटा कोन होबो ना ए जो एक्सप्लेनेशन जदी आपण प्रॉपर्ली फॉलो करूचंती ताहले आउ गोटे को क्वेश्चन आसी पारे सेम क्वेश्चन न होई पारे अलगा क्वेश्चन आसी पारे किंतु आपण आंसर टा कर देबे काहे ना एक्सप्लेनेशन रो क्वेश्चन टा आस्थिबो तेनु एक्सप्लेनेशन टा बहुत इंपोर्टेंट डिस्कशन में कोन मु पॉइंट वाइज आंसर टा कहि देबी किंतु आपण देखिबे केमिति ताकू एक्सप्लेनेशन टा ईच एक्सप्लेनेशन भलरे पढिबे ताका भाई अध अध पेज रो एक्सप्लेनेशन अछि तेनु समय लागिबो सेतै गोटे दिन रे मात्र हमें 20 टा प्रीलिम्स क्वेश्चन और 2टा मेंस क्वेश्चन करथि मेंस क्वेश्चन में अपन देखिबे जो मु कहली सी सबु आडू देखिकी सेटा क्वेश्चन टा देखि हमें एटा 15 मार्क क्वेश्चन ना हमें केबे भी लिख परियानी 15 मार्क क्वेश्चन किंतु गोटे छोटा एग्जांपल हमें नबा रेलेवेंट आपणकर जोटा रहउची मैक्सिम्स 4टा मैक्सिम देछि ता भीतर हमें जदी हम पाके सेते समय रहउची गोटे दे परिबे केस रो से 4 5 टा देथिबो हमकु गोटे दबार अछि सबुटु इंपोर्टेंट जोटा ओके एठी से बहुत गुडे केसेस देछि सेति के सेक्शन 3 और सेक्शन 9 बीएनएस रो ओके ता ऊपर जते इंपोर्टेंट केसेस अछि हमें गोटे दे परिबा कि बेसी समय दे अछि 2टा दे परिबा स्ट्रक्चरल फंक्शनल डायग्राम बहुत तरह एटा कहिछि तार हिंट्स सुरा देछि आउ जदि आपण को देखो स्ट्रक्चरल फंक्शनल डायग्राम टा अधिक समय लगे अधिक मार्क मिले धरंतु मो पाखे एते समय नै ताले मु गोटे जनरल टाइप रो कॉन्सेप्चुअल डायग्राम कर दे परिबी एमते ठीक है तो एईटा टिके भलरे देखिबे तार जो मॉडल आंसर टा ओके तार जो ईच एंड एवरी पार्ट सेटा टिके टिके देखिबार अछि ओके सो let us come to the discussion part now
ओके तो ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर ग्रुप रे दिया ही जाइछि अपन डाउनलोड कर देथिबे मु केवल तार आंसर टा डिस्कस करिवे अपन संगे क्वेश्चन 1 को आसंतु ओके प्लीज go through or please have your own question papers on your screen ओके अपन निजो क्वेश्चन पेपर टा रेफर करंतु तो मु बेसिकली क्वेश्चन नो डिमांड टा कोन और कोटा हला तार करेक्ट आंसर तारि विषय रे कहबे क्वेश्चन 1 को आसंतु which of the following statement most accurately reflects the combined effects of subsection 3 4 5 of section 1 of BNS 2023 ओके सो ऑप्शंस रा देखंतु सब ऑप्शन हमको डिस्कशन 1 आवर भीतर कंप्लीट करिया पे पड़िबो ओके जेहेतु आपण 6टा बेलु गुनी थ्योरी क्लासेस होची राइट सो बी विल बी द करेक्ट आंसर लायबिलिटी अंडर द संहिता arises for every act of omission contrary to its provision within India and specified extraterritorial situations are also covered as if committed within India तो तार जो extra territorial scope अछि माने बाहर भी जति गोटे इंडियन नेशनल से किछ गोटे करछि से भी बीएनएस अंडर रे आसे ओके सो बी विल बी द आंसर क्वेश्चन 1 पय आपनकर आंसर बी हबो ओके किंतु जोटा मु कहली आपण माने जेतो बेले ताको एनालिसिस करिवे ओके ऑलमोस्ट 1 पेज की हाफ पेज रो एक्सप्लेनेशन दिया हिची ईच ऑप्शन ता काई की ठीक अछि कि भूल अछि सेटा ठीक रे पडिबो हैला तो आंसर बी हबो क्वेश्चन 2 को बे आसंतु so B will be our answer for question 1 now come to question 2 for the purpose of section 5 of BNS which of the following correctly identifies the appropriate government in a case where the sentence is for an offense relating to matter to which the executive power of the union extends okay so it is central government को D will be your correct answer question 2 answer will be D एबे initially जो माने एगुडा आपण प्रथमे ए क्वेश्चन गुडा अटेम्प्ट करूचंती आगुरु केबे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बेसी अटेम्प्ट करि नांती ताले डोंट वरी अबाउट योर स्कोर एबे आपण क्वेश्चन ता पैटर्न ता जानंतु ए क्वेश्चन गुडा डायरेक्ट क्वेश्चंस नो रे टिके इंटरप्रिटेशन एथर इन्वॉल्व अछि तेनु ठीक अछि कोडेटा भितरु इनिशियली आपण जहां भी मार्क रखन जीरो भी रखन किछ असुविधा नै किंतु एवरीडे ग्राफ टा बढ़िवार अछि आपण जानछन सब तो 10 10 टा तो आज हमें बीएनएस टा कंप्लीट करू 1 to 10 खाली बीएसए तो बीएनएस बीएसए अल्टरनेटिव डेज 6 days a week वेडनेसडे हॉलिडे 3 दिन बीएनएस 3 दिन बीएसए ओके तो सेही हिसाब रे चलिबो तो काली हमर बीएसए 1 to 10 रहइबो ऑलरेडी से क्वेश्चन आंसर्स आपण का ऐप रे अछि तणु ताकू टिके भलरे देखिते ओके इंटीग्रेटेड बैच पिला माने भी एपीपी बैच पिला माने भी आउ जो माने केवल मेंटरशिप एंड आंसर राइटिंग पे जॉइन करछंदी से माने ठीक अछि हैला सो सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2 एबे क्वेश्चन 3 की असंतो which of the following is the correct meaning of good faith under section 2 of BNS 2023 so A will be the answer nothing is said to be done or believed in good faith which is done or believed without due care and attention okay जोटा कि 211 रे define हेछि okay so A will be the answer for question number 3 okay question 4 को आसंतु under section 2 of BNS 2023 which of the following best captures the presumption created by explanation 2 to counterfeit एगुडा जो मानकर मने रहउनी ताले आपण बेयर एक्ट रो हेल्प नै परिबे ओके किंतु परीक्षा तो ऑब्वियसली मो पके बेयर एक्ट नथिबो ओके तो मने रखेटा बेटर स्पेशली डेफिनेशन क्लॉजेस गुडा ठीक अछि सो question number 4 C will be the answer if the resemblance is such that a person might be deceived it shall be presumed until the contrary is proved that deception was intended or known to be likely
डायरेक्टली सेटा लैंग्वेज टा आपण देखि परिबे. Okay, so question 4 ro C will be the answer. Next, come to question 5. Which of the following is correctly included within the punishments enumerated in section 4 of BNS 2023? Probation, forfeiture of property, release on bond, or admonition. Okay, so correctly included, right? So कौन punishments आपनकर अछि? Okay, severity to start कले death, okay, imprisonment for life, तापर imprisonment जोटा कि rigorous behavior simple behavior, forfeiture of property, fine, आउ जोटा कि add करा हला community service. ठीक अछि. तो सेथरे probation, release on bond or admonition nahi. Tenu B will be the answer, forfeiture of property. So that will be number 5. Okay, B will be the answer. Now come to question number 6. Which of the following is correct meaning of dishonestly under section 2 of BNS? Okay, so answer are A, doing anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person. Okay, dishonestly. So A will be the correct answer for 6. Ebe 7% though. Question 7. A is an Indian citizen and from a cyber attack targeting a computer resource located in India causing disruption. Which of the following is the most accurate statement regarding the applicability of BNS? So Indian lokoda किंतु बाहर देश रे रही कि ओके से गोटे इंडियन साइबर एसेट ऊपर अटैक टा लॉन्च कला. ओके, सो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन स्कोप सेटा में देखिथिलु. So D will be the answer. The Sanhita applies because section 15C covers offences committed outside India targeting a computer resource located in India. Okay, so D will be the answer for question 7. Okay, tapare question 8 ko asantu. Which of the following statements is correct regarding the use of expression explained in any part of BNS 2023? Okay, question number 8. So, our correct answer. You can go through the options. Options actually move body level today. Both adhika type number. So, I am just skipping that. B will be the correct answer for question number 8. Every expression explained in any part is used in every part in conformity with that explanation. Okay. Tapre question 9. What a problem type of question ache. Dekhando eta A and B are joint jailers and alternately have charge of prisoner Z. Both intend to cause Z's death and each during his duty hours illegally omits to provide food supplied for Z. Z dies of hunger. Which statement is legally most accurate under section 3 of BNS? So, C will be the answer. Both are guilty of murder because they knowingly cooperate in causing death by illegal omissions as part of criminal act done by several persons. Okay, so C will be the answer. Question 10%. Which of the following is correct during regarding the meaning of court under section 2 of BNS 2023? Okay, so definition clauses court right?
So A will be the answer. It includes a judge empowered by law to act individually, act judicially, sorry, alone, or a body of judges empowered to act judicially as a body with when acting judicially. Okay, so jaha exactly apanakara barrack language re lekha hai. Okay, so A will be the answer for question number 10. Tapare question 11 ko asandu. Under section 6 of BNS 2023, imprisonment for life shall be reckoned as equivalent to which of the following when calculating fractions of terms of punishment unless otherwise provided. So ei jo provision ta fraction of term eta tike mon rakhibe kahingi na eta factual jinsa. Okay, so A would be the correct answer. 20 years imprisonment, right, equivalent to 20 years of imprisonment for calculating fractions. Okay, life imprisonment, right? That is question number 11. A will be the answer. Tabare question 12 under section 7 of BNS 2023, where imprisonment may be of either description, which of the following correctly describes the court's power? Question number 12. So, correct answer is B. The court may direct imprisonment to be wholly rigorous, wholly simple, or partly rigorous and partly simple. Okay, so B will be the answer for question 12. Question 13. Under section 8.1 of BNS 2023, where no maximum fine is specified, which of the following correctly states the legal position? Okay, so C will be the correct answer. The fine amount is unlimited but shall not be excessive. Okay, so C will be the answer for question 13. Now come to question 14. Question 14, question hela. Under section 8.3 of BNS 2023, imprisonment in default of payment of fine shall not exceed which of the following limits when offense is punishable with imprisonment as well as fine? So B are answer about 1/4 of the maximum imprisonment term fixed for the offense. Okay, so that will be the answer. 14 answer B hoga pragala. Now come to 15. Under section 8.6 of BNS 2023, which of the following is the legal effect if the fine is fully paid during imprisonment in default? Okay, so imprisonment must immediately terminate. ठीक है, फाइन जहाँ दिया ही थिला सेटा से पे कर पार नटला डिफॉल्ट हेतला फाइन पे करिवार तेणु इम्प्रिजनमेंट बढ़िला ता भितर फाइन टा ओके पे कर दे पारला त माने imprisonment must be immediately terminate. Okay, imprisonment must immediately terminate. Sange sang once se pay कर दोची तो immediately terminate हमारा अछि. So A is the answer for question 15. Question 16. Under section 8.7 of BNS 2023, fine may be levied within which maximum period of passing of sentence? So 6 years or longer if imprisonment liability exceeds 6 years. B tara answer habo. Tapare question 17. Under section 9.1 of BNS, which where an offense is made up of several parts, each of which in itself is an offense, which of the following applies? Okay, question 17. All the options, C will be the correct option. Offender shall not be punished with imprisonment of more than one of such offenses unless expressly provided. So 17 ro answer was C.
तापरे क्वेश्चन 18 को आसंदो when a single act falls within two separate offense definitions, which of the following applies under section 9(2)? Okay, so D will be the answer. Punishment must not be more severe than maximum punishment for any one offense. So D will be the correct answer. Okay. Question number 18, D will be the correct answer. Question 19, where a person is found guilty of one of several offenses, but court is doubtful which offense is committed, which punishment shall be imposed under section 10? So, question 19, the answer will be B. Punishment prescribed for the offense carrying lowest punishment. Okay, so B will be the correct answer. Question 19. Last question for prelims. Question 20. A is sentenced to a fine of 10,000 rupees and deferred imprisonment for 4 months. After serving 2 months imprisonment, he pays full fine. What is the legal consequence? That I देखते से यदि default रे तारो term serve करूची या उसे pay कर देला fine टा ताली immediately तक बड़ा release करिवार अछि. What is the legal consequence? So D will be the answer. He must be immediately released. Okay, तो हमें देखी जो आगे गोटे question. Okay, so जो माने prepare करी थिले माने जो माने नुआ नुआ एबे माने आगुरु एक्सपीरियंस अछि परीक्षा वरिका दबार कि आपण मॉक टेस्ट वरिका देई चंदी ताले यू शुड स्कोर एटलीस्ट 10 प्लस हला ताडू ऊपर रखले तो बहुत भलो पूरा जी नुआ अछंती आपण जा भी स्कोर करंतु सेटा किछि इंपोर्टेंट नाही एबे 1 मंथ खाली आपण प्रैक्टिस रे पढंतु कि सबुदिन मते पर्टिकुलर जिंस पढिबार अछि आउ सेटा को तारी ऊपर क्वेश्चंस आंसर करिवार अछि तो हमें बेसी बेसी भी सेक्शन नबानी 10 टा सेक्शन अल्टरनेट डेज रे नबा इट विल टेक सम मोर टाइम ओके कि मुझे जदि कहबी आपण 1 रु 100 पढि के आसंतु गोटे दिन रे आपण प्रॉपर्ली भी सेटा ओके डिफिकल्ट हिजो एटी कोन ना 10 टा सेक्शन रो 20 टा क्वेश्चन कला को पाखा पाखी इंपोर्टेंट सेक्शन रो ओके प्राय हमर प्रैक्टिस टा हिजो देन नाउ यू कम टू द मेंस क्वेश्चंस ठीक है अच्छा मेन क्वेश्चन को कहितली 15 मार्क क्वेश्चन दिटा को हमरो 15 मिनिट दिया होछ ओके जो भी रिटर्न पे आपण प्रिपेयर करंतु ओडिसा रे मेनली कहले ओजेएस पे कि एपीपी पे हम 15 क्वेश्चन आउची आउ बोथ स्ट्रक्चर आपनकर सेम अछि ओके मोर और लेस सेम अछि कहि परिबे काहे ना जेमति कहली क्लास रो बिगिनिंग रे कि ओजेएस रो ऑप्शनल पेपर छुडा आपनकर रहउची कोन ना 25 मार्क्स बट 30 मिनिट्स रहउची हला 3 घंटा पेपर उडा छुडा बाकी प्रोसीजरल लो आउ आपनकर एपीपी रो ओके जेति की मार्क सेति की मिनिट्स 25 मार्क क्वेश्चन 25 मिनिट 15 मार्क क्वेश्चन 15 मिनिट 10 मार्क क्वेश्चन 10 मिनिट तो एई जो तीनटा क्वेश्चन एगुडा 15 मार्क क्वेश्चंस अछि दीस ऑल क्वेश्चंस आर बेसिकली 15 मार्क क्वेश्चन तो आपण 15 मिनिट रे सारीबे हला 15 मिनिट रे से जा लेखाई छी आपनकर मॉडल आंसर रे तो सारी होबन तो मते मॉडल आंसर रो स्ट्रक्चर को देखिबार अछि तापरे मोर स्पीड केति की अछि से हिसाब रे मु लेखिबी आपण एमिति भाबे कि मॉडल आंसर रे जा बढ़िया रे से जो फिगर टा कराई छी गोटे कलरफुल फिगर रे से सेगुडा आपण को बुझिया पई से पांचटा केस लॉ देई छी से पांचटा मैक्सिम देई छी इलस्ट्रेशन दी तीनटा पसी देई छी सेटा आपण को बुझिया पई हला सेइटा लिखि से तो लिखला अधघंटा पड़े सेतर ओके क्रक्स ऑफ द मैटर क्वेश्चन कोन पचारची जेते बेले हमकु मेंस रो क्वेश्चन मिलुची हमकु केमिति मेंस रो क्वेश्चन को अपियर करिवार अछि सेटा फर्स्ट मु बुझौची एबे आपण देखंतु आपण क्वेश्चन आसिला sections 3 and 9 of BNS contain provisions governing liability arising from criminal acts involving multiple acts omissions or overlapping offenses एटी किछ पचार लखी ओके एटी ये हला आपको हमें कहूछु डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट किछ डिक्लेयर करू जे एमती हिची सेमती हिची या कहिची हला जेमति कि हमें प्रॉब्लम क्वेश्चन रे फैक्ट्स कहू ओके तो सेटा कहला एटी किछ हमरा पचारनी जो जिंस पचारे कि आपण एया लेखंतु एया करंतु एमती करंतु सेटा को कहै जाय डायरेक्टिव कीवर्ड ओके तो एठी किछ डायरेक्टिव कीवर्ड ए पर्यंत दिया ही सेकंड सेंटेंस को आसो एनालाइज तो एटा हैला डायरेक्टिव कीवर्ड एंड एक्सक्यूज
analyze how these provisions reconcile the principles हैला ए जो प्रोविजन उडा देइची ए अंडर रे रिकनसाइल केमती करछथि को प्रिंसिपल को जॉइंट लायबिलिटी रो एडा सब अंडरलाइन हबो माने मोर आंसर रे आ ऊपर मु फोकस करिछि कि नहीं नले सी तो आपण खाली 3 और 9 जदी लिखि देबे निजो हिसाब रे निजे जानि चंदी मोटे रो मार्क आसीबो से पचारछि कोन ओके जॉइंट लायबिलिटी एंड प्रोपोर्शनल पनिशमेंट एई दीटा कांसेप्ट 3 और 9 संगरे केमिति जड़ित सेटा मते लिखिबार अछि एटा हला फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हला क्वेश्चन द दीटा पार्ट अछि एंड एक्सप्लेन तो सेकंड डायरेक्टिव हला एक्सप्लेन हाउ द लॉ प्रिवेंट्स बोथ इवेजन ऑफ लायबिलिटी तेनु लॉ प्रिवेंट करूछि केमति नंबर 1 इवेजन ऑफ लायबिलिटी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट इन सच सिचुएशंस हला क्वेश्चन जेतले मिलुछि अंडरलाइन कर देबे क्वेश्चन द रिक्वायरमेंट कोन नले कोन खुशी रे मु जानिछि 3 मु जानिछि 9 मु ताकू कोन लिखि देबी गोटे ओके ठीक जिनसटा लिखिबी किंतु परीक्षा रे आपण कोन जानिचंती ता ऊपर मार्क मिलेनी पचरा कोन हिची और आपण ताकू एड्रेस करचंती कि नहीं तारी ऊपर मार्क मिलिबो बुझि पाउचंती तेनु अंडरलाइन करिवे ठीक रे नुआ हिचन नुआ लेखुचन जदी बहुत इंपोर्टेंट ए स्किल टा डेवलप करिवा आ जदी ठीक एक्सपीरियंस अछि किंतु मेंस रे एते भलो मार्क्स आसुनी एई गोटे स्किल प्रथमरु सिखंतु कि जहां आपनकर रिक्वायरमेंट अछि क्वेश्चन रो सेटा पेपर ऊपर ही क्वेश्चन पेपर ऊपर अंडरलाइन करिवे सो दैट सेटा आखि सामने रहिबो कि मते एई जिंसटा मु करिछि कि नहीं बुझि परले अच्छा ओवरऑल तो से तो 6 पेज रो मॉडल आंसर देछि सेमिति मु केमति कहिली सेमिति केवल लेखि हबो तो ता पे एते व्यस्त होनुनी के जणा पुराना पिला से माने इनिशियली ताको एई प्रॉब्लम हुए सर मॉडल आंसर रो जा जा सब देछि ओके हमें माने तार हाफ भी लिख पाबो आपण हाफ लिखि भी परिबे फॉर एग्जांपल आपण देखो तो इंट्रोडक्शन से पांचटा पॉइंट दिछ मु हार्डली गोटे पॉइंट लिखि इंट्रोडक्शन सबले मन रखिबे आपण को बुझिबा पई आपण को मॉडल आंसर रे इंट्रोडक्शन आउ कंक्लूजन हेडिंग दिया अछि परीक्षा खाता रे केबे भी इंट्रोडक्शन कंक्लूजन हेडिंग देबेनी आपण इंट्रोडक्शन सीधा स्टार्ट करी फर्स्ट पैराग्राफ इज ऑलवेज टेकन एज इंट्रोडक्शन लास्ट पैराग्राफ इज ऑलवेज टेकन एज कंक्लूजन सेटा लिखिया किछि दरकार ठीक अछि कोन देबे इंट्रोडक्शन रे ओके सो सेक्शन 3 और 9 ऊपर अल्प अल्प किछि लिखिबे सेक्शन 3 कोन कहूछि 9 कोन कहूछि बस सेति हला तापरे स्टैट्यूट्स जो पर्टिकुलर प्रोविजन ओके 33 34 35 36 37 ओके सेगुडा 38 39 91 92 ओके आउ कॉन्टेक्स्ट जदी देई परिबे ताले सेक्शन 10 भी अल्प अल्प लिखिबार अछि पूरा तो आपण सेक्शन लिखि परिबेन ओके सी जो जा आपण अंडरलाइन करथिले एबे सेठी के आसो ओके इवेजन ऑफ लायबिलिटी केमिति सेटा प्रिवेंट करा होछि ओके जो 35 रे जोटा कुआ गला होल एक्ट सेटा आपण देखिबे ओके तापरे 34 37 ता ऊपरे ओके तापरे जो डिवीजन ऑफ लेबर इन क्राइम ता माने गोटे क्राइम करा होछि तुमे एई काम करो तुमे एई काम करो तुमे एई काम करो ठीक अछि जोटा 38 रे कहूछि राइट तापरे जदी मेंटल स्टेट डिफर करछि जो माने क्राइम करछन 39 कोन कहूछि सेटा आपन को देखिबार अछि मॉडल आंसर रे गोटे जिंस देखिबे सबरो हेडिंग्स दिया छै से हेडिंग गुडा बेसी इंपोर्टेंट हेडिंग पर जो एक्सप्लेनेशन दिया छै सेटा आपन निजे देले चले ठीक अछि तापरे प्रोपोर्शनेट जोटा आसिला कि एक्सेसिव पनिशमेंट ओके जोटा कि गोटे कंपोजिट ऑफेंस रे किबा ओवरलैपिंग ऑफेंस रे केमिति रेस्ट्रिक्ट करा होछि ओके तो ता ऊपर आपण 91 92 92A 92B ओके ता ऊपर टिके टिके लिखिबार अछि राइट सो एई पॉइंट्स गुडा मेनली हमर जहा जहा से क्वेश्चन पचारला से सब गुडा कवर करूछ राइट कांसेप्ट भलो रे बुझिबा पई इलस्ट्रेशन दिया आइछि सेडा परीक्षा रे लिखिबा दरकार नै हम कय समय नै ओके 25 मार्क क्वेश्चन पढंदा ठीक अछि मु ताले अलगा जिंस लिखंदी एटा सब 10 15 बार क्वेश्चन पढिबो टू द पॉइंट लिखिया पे पढिबो नले केबे भी पेपर सरीबो मु सब जानि दिबी किंतु पेपर सरीबो ओके ताले लैंडमार्क केस लॉस बहुत गुडे अछि ओके सेठी 5 6 टा देछि हमें एते लिख परिबानी गोटे की 2टा लिखिले ओके
पांडुरंग केसटा लिख परिबे कि महबूब शाह केसटा लिख परिबे जा भी एनी वन यू कैन राइट ओके एमती नो कि बहुत बहुत गुडे आपन को लिखिबार अछि और जदी वन लाइन रे लिखछोदी दीटा मैक्सिमम ओके एसएल आपते सेटा भी आपन लिख परिबे ठीक अछि सेथरे आपन का खाली कोट कोन कहिचंती सेति कि आपन को लिखिबार अछि सेटा आ पूरा आपन फैक्ट्स ऑफ द केस आ यू नो जोटा हमें जो प्रॉब्लम क्वेश्चन से जो स्ट्रक्चर टा हमें यूज कर ठीक अछि तो फैक्ट्स कोन इश्यूज कोन ओके सेटा एठी देई हबनी सब केस न बुझि पारले जदी आपनकर लीगल मैक्सिम्स मने रहउची मेमोरी भलो अछि ताले रेलेवेंट लीगल मैक्सिम कोन हे परिबो ए क्वेश्चन बाय मॉडल आंसर रे सिंधी 4-5 टा से देथिबो किंतु आपण गोटे जदी मन रखियो इट इज नॉट मैंडेटरी इट इज डिस्क्रिशनरी आपण मन रहइबो त लिखिबे मार्क किंतु पडिबो गोटे पिला जे लेखुनी गोटे पिला जे लेखुची सेटा किंतु रेलेवेंट हितबा दरकार सी ऑब्वियसली अधिक मार्क पाइ ओके तो से जिनसटा माइंड रे रखिबार अछि तापरे जदी 15 मार्क रु ऊपर रो क्वेश्चन एटा पडला मु तो एडी 15 मार्क कहली मु तो 25 मार्क क्वेश्चन फॉर एग्जांपल ताहले गोटे स्ट्रक्चर फंक्शन डायग्राम करिवे मॉडल आंसर रे स्ट्रक्चर फंक्शन डायग्राम रो टेक्स्ट स्ट्रक्चर ता देछि कि सेंट्रल नोड कोन हबो कनेक्टेड नोड कोन हबो कनेक्टेड एरोज कोटा हबो ओके तो सेही डायग्राम्स केमति करा जाय ऑलरेडी हम बहुत डिस्कस करछु नहले जदी सेटा आपन कष्ट लागुची ताले जो सिंपल लॉजिकल डायग्राम जो कलर्ड है कि दिया आइची ओके से जति की पॉइंट रे दोची सेटा आपण लिखि परिबे डायग्राम ता करिबाटा टिके बेटर 15 मार्क क्वेश्चन ऊपर डायग्राम ता कले बेटर बुझि पारले अच्छा जो माने केबे भी प्रैक्टिस करनंती आंसर लिखिबा तो आफ्टर द क्लास जेते बेले आपण जिबे आपनकर मॉडल आंसर को आपण देखि कि भी लिखन ओके कोन कोन लिखिबे इंट्रोडक्शन ता लिखा हबो बॉडी भीतर से जहा जहा पचाची माने मु जहा जहा अंडरलाइन करची से गुडा लिखा हबो गोटे केस लॉ देबे आउ कंक्लूजन ता लिखा हबो और डायग्राम जदी 15 ऊपर अछि एटा 15 मार्क दीटा क्वेश्चन अपन डायग्राम प्रैक्टिस करते भी करो सेटिंग आउ तक आपन को बुझिया पे जो इलस्ट्रेशन देछि पांचटा मैक्सिम देछि सेटा आपन जदी निजरो नॉलेज को बढ़ा पे चाहउछंती ताले सेटा पढिबार कि असुविधा नै किंतु गोटे मन रखंतु सेतर लाभ अछि एही क्वेश्चन ने डायरेक्टली न पढि पारे एही क्वेश्चन रिलेटेड आउ किछि पढि पारे जदी मु मने रखछि से गुडा मु लिखि दे परिबि सेतरे हला सो एटा गला आपनकर क्वेश्चन नंबर 1 एबे क्वेश्चन नंबर 2 को आसे ओके सो section 10 of BNS provides for punishment in cases where it is doubtful which of the several offenses have been committed hela declaration ta dela tapare analyze direction ta first directive what ta dela the rationale behind this provision and explain how it reflects the principle of fairness presumption of innocence hela को principles रिफ्लेक्ट करूची तबने एही प्रिंसिपल्स जहां भी हेले आरो रिलेशन मते सेक्शन 10 संगे रे दबार अछि कोन फेयरनेस प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सेसिव पनिशमेंट इन क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस हला तेनु जेतरो आंसर फाइनली 5 मिनिट 10 मिनिट मु तो सबले रखिबी कि आंसर ता चेक करिया पे जेतरो आंसर चेक करिवि जस्ट एई तीनटा पॉइंट देखि प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस लिखाई थी ओके जति कि आपण लिख परिबे presumption of innocence लिखाई छी ओके आउ प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सेसिव पनिशमेंट लिखाई छी बस से माने भी जिनसोटा एया ही देखंदी कि सब पार्ट आपण एड्रेस करछथि कि नहीं राइट तो एथरे कोन आपण लिखि सो फर्स्ट तो हला आपनकर सेक्शन इंट्रोडक्शन रे सेक्शन 10 कोन 1 की 2 लाइंस रे ताको लिखिबे ओके तेनु तार टेक्स्ट रे कोन को आउची तार स्कोप कोन सेक्शन 10 एप्लीकेबल केते बळे होय हला एसेंशियल कंडीशन जोडा सेक्शन 10 रो एप्लीकेबिलिटी ऊपर ठीक अछि तापर से जा पचरची कि ज्यूरिस्प्रूडेंशियल रैशनल ऑफ सेक्शन 10 ओके प्रोटेक्शन ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस ओके केमिति सेटा प्रोटेक्ट करूची प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस को रिफ्लेक्शन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी प्रिंसिपल प्रिवेंशन ऑफ जुडिशियल आर्बिट्रेरीनेस ए जो हेडिंग सुडा सेगुडा लिखिबार अछि ओके
आउ तापर लैंडमार्क केसेस दी तीनटा देइची दैट यू कैन गो थ्रू ओके जेमति कि विलियम स्टैनले वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश हला ओके तापर के प्रेमा एस राव वर्सेस यादला श्रीनिवास राव हला ठीक अछि एटा गोटे यू नो जहां पर केस देखु जदी टिके केस रो बैकग्राउंड ता जानले सुविधा हो काहे कि आमे तो लिखिबा गोटे लाइन कि से केस रो फाइनल जजमेंट रे कोन कहैता जेमति कि ए जो के प्रेमा एस राव वर्सेस यादला श्रीनिवास राव 2003 रो केस एटा एतरे कोन ना सुप्रीम कोर्ट कहितले कि जदी हायर ऑफेंस ता प्रूव ही परनी ओके आउ लोअर ऑफेंस ता प्रूव होची ओके ताहले लोअर ऑफेंस पर कन्विक्शन हो ए पर्टिकुलर केस रे कोन हेतिला ना हस्बैंड ऊपर डाउरी डेथ रो केस चलथिला ठीक अछि किंतु सेटा प्रूव हे परलानी डाउरी डेथ ला किंतु अबेटमेंट टू सुसाइड ता प्रूव हे गला ठीक अछि तेनु से कन्विक्ट हे गला अबेटमेंट टू सुसाइड रो किंतु डाउरी डेथ रे एक्विट हे गला एक्विटल आसी गला डाउरी डेथ बुझि पाले तो तेनु टिके बैकग्राउंड भी सब केस रो जानिबा पॉसिबल नो जोटा कि हमें देखिलु इंपोर्टेंट और रिसेंट लैंडमार्क केसेस जो बॉयटा कहितली सामर्थ अग्रवाल करो सेइडा तार भी जो केसेस उडा अछि आउ टॉपिक हिसाब रे ठीक अछि तो सेइडा टिके टिके जानिथिले भी आपन को सहज हबो ओके टिके 5-6 टा केस देछि आपन पढंतु सब गुडा लेखिला ले गोटे केस लिखि ठीक अछि सो केना सेटा भी बहुत इंपोर्टेंट देखो जेतर गोटे केस रो जजमेंट ऑफ सेतर बहुत गुडे जिंस रहउछि ठीक अछि तेनु हमको को जिनसटा रेलेवेंट अछि आंसर रे दबार अछि से हिसाब रे मते केस लॉटा दबार अछि ओके सो एतिकी मते लेखिबार अछि ओके सो गो थ्रू दिस इलस्ट्रेशंस करी कामर दरकार नै मैक्सिम्स इफ यू आर गुड एट इट गोटे खंडा हेले चलिबो तापरे जदी समय अछि ताले सेक्शन 10 रो सेक्शन 9 संगे को रिलेशन अछि सेटा आपण दे पर ओके सो आउ ए जो लॉजिकल डायग्राम उडा दिया अछि लॉजिकल डायग्राम सब मन रखिबे आपण भाबुथिबे लॉजिकल डायग्राम तो दिया अछि गोटे जोटा कि टिके जल्दी करि हो माने 1 मिनिट भीतर करि हिजो लॉजिकल डायग्राम किंतु ताहले आपण एटा काई कि दैछथि स्ट्रक्चरल फंक्शनल डायग्राम ता जोटा कि टिके बड़ डायग्राम और बेसी मार्क मिलिबो सेगुडा सब 20-25 मार्क क्वेश्चन जोटा कि डायग्राम टेक्स्ट स्ट्रक्चर जोडा लिखाइ आ जदी 10 मार्क रो क्वेश्चन पड़ला और मते मिनिट भीतर ओटा डायग्राम करिवार अछि ते जो कलर टाइप रो डायग्राम उडा दिया अछि ना ओवल्स भीतर सेई गुडा आपण कर दे परिबे ठीक अछि 5 मार्क क्वेश्चन पे डायग्राम हुएनी डायग्राम आरंभ हुए 10 रु अधिक ठीक अछि तो डायग्राम करू करू एमती न हो कि आपण 5 मार्क क्वेश्चन रे भी डायग्राम करिया स्टार्ट कर दे ठीक अछि तो डायग्राम ए जो लॉजिकल डायग्राम 10 मार्क क्वेश्चन पे हुए आउ 15 मार्क क्वेश्चन पे जदी समय अंतुनी आउ स्ट्रक्चरल फंक्शनल डायग्राम सेगुडा आपनकर हुए 20-25 मार्क माने मोर देन 15 मार्क जो क्वेश्चन उडा आपनकर रहउछि ओके बुझि पार तेनु नेक्स्ट स्टेप हैला जो माने फर्स्ट टाइम आंसर लिखिबे जो माने कॉन्फिडेंट अछंती बुझि गले हां जानिलु हमें लिखि पारिबु तले निजे लेखंतु न देखिकी किंबा आपण एमती भी कर परिबे कि से जो आपनकर मॉडल आंसर्स दिया आइछि ताकू प्रथम 2-3 थरा पढो पढला परे बुझि गले जदी डाउट हबो मते व्हाट्सएप रे जणाइबे मते किछि टाइम देबे मु वॉइस नोट रे आपनको क्लास सरीले ओके मोर थेरेपी सेशन सरीका सर रे तापर मु आपनको सेटा आंसर ता कहि दे परिबे ठीक अछि आउ जो माने पूरा माने लिखिबा पे ही प्रॉब्लम होउछि मासे पर्यंत आखि बंद करिकि मॉडल आंसर पकांतु आपण लेखंतु ताकू टाइम टाइम किछि देखिया दरकार किंतु टिके जानंतु कि हां ये पूराटा मते लिखिबार नै परीक्षा रे ओके इंट्रोडक्शन लिखिबी बॉडी जा पचारची क्वेश्चन रे सेटिक लिखिबी गोटे केस ला देबी ओके आउ डायग्राम ता करबी जदी 10 मार्क ऊपर क्वेश्चन हैला लॉजिकल डायग्राम 10 मार्क 15 मार्क यदि 20-25 मार्क हैला ताले स्ट्रक्चरल फंक्शनल डायग्राम करिया पे चेष्टा करबी बुझ परले सो एटा आजिरो थिला हमर बीएनएस 1 to 10 काली बीएसए 1 to 10 ता देखिबा बीएसए एक्चुअली सप्ताह ऊपर हैलानी सेटा दिया ही गलानी ऐप रे तो आज राति रे आपण ताको पढी दे परिबे और डायरेक्टली 4टा रु 5टा आपण परीक्षा देबे निज टाइम रे आउ 5टा रु 6टा हमें एटी डिस्कशन करी ओके सो एनी डाउट्स एनीथिंग यू वांट टू आस्क तले मते पचार परिबे एल्स यू कैन गो एंड प्रैक्टिस नाउ क्लास परे आपण ऐप रे पाई जिबे आपणकर
मॉडल आंसर टा क्वेश्चन टा ग्रुप रे दिया जाउची क्वेश्चन टा आपण डाउनलोड कर परिबे इफ यू वांट टू शेयर इट अमंग फ्रेंड्स एंड ऑल सेडा सो कर परिबे बट जोडा मॉडल आंसर टा सेटा आपण को ऐप रे मिल ठीक अछि ऐप रे गोटे फोल्डर अछि मु कहि दउची डिफरेंस टा कोन ऐप रे गोटे फोल्डर अछि आपनकर सेटा हला आपनकर जुडिशियल आंसर राइटिंग बैच ओके सेगुडा पैरेलल जेमति कि आजी सीआरपीसी रो आउ दीटा सेतरे मॉडल आंसर पळिछि ठीक अछि तो सेटा ता बाटरे चलतिबो आपन को कोन करिवार अछि किंतु एइटा हला जोटा कि लाइव जोटा मेंटरशिप बैच फोल्डर रे जोटा रोछि एइटा हमें जोटा सबुटा डिस्कस करिवा ठीक अछि सेपट ऑलरेडी एविडेंस एक्ट सरी जाइछि ओके एविडेंस एक्ट रो सबु सेक्शंस रो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और द मॉडल आंसर जाइछि सीआरपीसी हाफ हे गले तेनु सेटा को भी देखुथिबे जो मन को एई वर्ष परीक्षा दबार अछि एना नोटिफिकेशन आसी गला परे आउ एते समय आपन को मिलिबो बुझि पारे सो आफ्टर द क्लास यू कैन गो एंड गो थ्रू दैट आउ मेन जिंस जो दि तीनटा पॉइंट कहली फर्स्ट क्वेश्चन रो इंपोर्टेंट पार्ट्स रो अंडरलाइन करंतु सेटा स्टेप 1 ठीक अछि तो सेटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट हैबिट नले कोन ना तीनटा जिंस पचाथिबो क्वेश्चन ने मते आसुची किंतु मो देखिनी खुशी रे कि एते इजी क्वेश्चन पड़ी गला मु मात्र दीटा कली थर्डटा भूली गली सेते जेमति मु अंडरलाइन करची आपन को क्वेश्चन ऊपर जहा जहा पचाउची क्वेश्चन रे ताकू सेही हिसाब रे अंडरलाइन करिवार अछि ओके फाइन सो विल स्टॉप हियर देन इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस जदि आपन किछि पचारियार